Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. When you take a look at the greatest leaders, one of the traits they possess is the ability to communicate effectively, which underscores the importance of communication skills. So in today's lecture, we are going to discuss about the 10 most important tips that will help you boost up your communication skills. So before starting the lecture, if you haven't subscribed my channel, kindly subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you can get the latest educational and informational videos. Let's move on towards the basics of today's lecture. The first tip I'm going to share with you is listen, listen, and listen. People want to know that they are being heard. Really, listen to what the other person is saying instead of formulating your response. Ask for clarification to avoid misunderstandings. At that moment, the person speaking to you should be the most important person in your life. Another important point is to have one conversation at a time. This means if you are speaking to someone on the phone, do not respond to an email or send a text at the same time. The other person will know that she doesn't have your undivided attention. जब भी आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो सामने वाले की ये ख्वाहिश होती है कि उसको ध्यान से सुना जाए, बजाय इसके कि आप अपने दिमाग में उस क्वेश्चन के आंसर को फॉर्मुलेट करते रहें। आप सामने वाले की बात को ध्यान से सुने ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उसको क्लैरिफाई किया जा सके, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट ना हो। कम्युनिकेट करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि आप एक ही कॉन्वर्सेशन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी से फ़ोन पे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसके साथ आपने ईमेल्स को रिस्पॉन्ड करना या टेक्स्ट मैसेजेस टाइप नहीं करने हैं, क्योंकि इससे आपकी जो अटेंशन है वो डिवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें बाद में समझ नहीं आती और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं। सो यू हैव टू completely focus on that particular person whom you are communicating. The second tip I'm going to share with you is who you are talking to matters. It's okay to use acronyms and informal language when you are communicating with the buddy. But if you are emailing or texting your boss, hey, TTYL or TC, TY or any informal language has no places in your message. You cannot assume that the other person knows what the acronym means. Some acronyms have different meanings to different people. Do you want to be misunderstood? Effective communicators target their message based on who they are speaking to, so try to keep the other person in mind when you are trying to get your message across. जब भी आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपने फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बॉस से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप उनको TTYL जो है वो टेक्स्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आप अपने दोस्त की बात कर लें तो अक्सर आपके दोस्त आपको मैसेज करते हैं तो आप उनको रिप्लाई करते हैं TTYL मीन्स टेक्स्ट टू यू लेटर। लेकिन इस तरह के एक्रोनिम्स आप बॉस के साथ या किसी भी फॉर्मल प्लेस पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मीनिंग क्रिएट करके आप मैसेज कर रहे हैं, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, वही मैसेज उसको रिसीव करने वाला भी उसी तरह से उसको अंडरस्टैंड करे। इससे क्या होगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाएंगी। सो यू हैव टू यूज़ फॉर्मल लैंग्वेज इन फॉर्मल प्लेसेस। Third tip is body language matters. This is important for face-to-face meetings and video conferencing. Make sure that you appear accessible, so have open body language. This means that you should not cross your arms and keep eye contact so that the other person knows that you are paying attention. चाहे आप फेस टू फेस मीटिंग्स कर रहे हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अटेंड कर रहे हैं, उसके लिए आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को प्रॉपरली यूज़ करना है। आपने प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट रखना है टू मेक श्योर दैट यू आर प्रॉपरली पेइंग अटेंशन। Fourth tip is check your message before you hit send. Spell and grammar checkers are lifesavers, but they are not foolproof. Double check what you have written to make sure that your words are communicating the intended message. मैसेज को सेंड करने से पहले उसमें चेक कर लें कि कोई ग्रामेटिकल, स्पेलिंग, पंक्चुएशन या कोई भी मिस्टेक तो नहीं है जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ब्लू फाई ने इस ईमेल में अपनी सब्जेक्ट लाइन को इस तरह से कोट किया है, सी इट, लव इट, नॉट गेट इट। जबकि हर पढ़ने वाले को ये पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या मिस्टेक है। ये इस तरह से होना चाहिए था, सी इट, लव इट, नाउ गेट इट। इट्स जस्ट अ स्पेलिंग मिस्टेक बट इट क्रिएट्स ग्रेटर मिसअंडरस्टैंडिंग. So, before sending message, proofreading is very important to avoid confusions and misunderstandings. Fifth tip you have to keep in your mind is be brief yet specific. For written and verbal communication, practice being brief yet specific enough that you provide enough information for the other person to understand what you are trying to say. And if you are responding to an email, make sure that you read the entire email before crafting your response. With enough practice, you will learn not to ramble or give way too much information. मीन्स कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो अपनी बात को समझाने के लिए कम से कम वर्ड्स का यूज़ करें। जहाँ पर भी आप कम वर्ड्स में अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं, वहाँ पर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, बहुत ज़्यादा बोलना मैटर नहीं करता। ये बोरिंग सिचुएशन पैदा कर देता है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप अपनी बात को कम से कम वर्ड्स में, कम से कम पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, देन इट्स वेरी बेटर। और अगर आप ईमेल को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उस ईमेल को पूरा पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, तब आपने अपने आंसर को फॉर्मुलेट करना है। ऐसा नहीं करना कि आपने ऊपर ऊपर से बस ईमेल को पढ़ा और जो आपके दिमाग में आया आपने बस रिस्पॉन्ड कर दिया उसको। नो, आपने अच्छी तरह से पूरी ईमेल को पढ़ना है एंड देन यू विल फॉर्मुलेट योर आंसर अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट in order to avoid any kind of misunderstandings. Sixth tip is write things down. Take notes while you are talking to another person or when you are in a meeting. And do not rely on your memory. Send a follow-up email to make sure that you understand what was being said during the conversation. जब भी आप किसी मीटिंग में हैं, किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस में हैं, फेस टू फेस मीटिंग में हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप राइट डाउन कर लें। आप प्रॉपरली अपनी मेमोरी पर रिलाई मत करें। उस टाइम आप ये सोच रहे होते हैं कि नहीं मैं नहीं भूलूंगा, मुझे ये सब कुछ याद रहेगा। ऐसा नहीं होता। कुछ टाइम के बाद जब आप याद करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे मेन पॉइंट्स आपको भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन द मेन पॉइंट्स ऑफ योर कॉन्वर्सेशन rather than relying on your memory. Seventh tip we have is sometimes it's better to pick up the phone. If you find that you have a lot to say, instead of sending an email, call the person instead. Email is great, but sometimes it is easier to communicate what you have to say verbally. मीन्स कि अगर आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है तो बेहतर है कि आप ईमेल की बजाय कॉल के ऑप्शन को चूज़ करें। इसका क्या बेनिफिट होगा कि अगर आप कॉल पे कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो एट अ टाइम अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो उसको भी क्लैरिफाई किया जा सकेगा और टाइम भी कम लगेगा। जबकि अगर आप ईमेल के ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो पहले इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को टाइप करना, फिर उसको चेक करना कि कोई स्पेलिंग, ग्रामेटिकल, पंक्चुएशन कोई भी मिस्टेक तो नहीं है जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके। इसके बावजूद भी अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो वापस से उसके लिए रिस्पॉन्ड करना, इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। सो इन ऑर्डर टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव, इफ़ यू हैव अ लॉट टू से, calling is better option to choose rather than sending emails. Eighth and the most important tip I'm going to share with you is think before you speak. Always pause before you speak, not saying the first thing that comes to mind. Take a moment and pay close attention to what you say and how you say it. This one habit will allow you to avoid embarrassments. जब भी आप कुछ बोलने लगे हों, it's very important to think before it. क्योंकि जो अल्फाज आपके मुंह से निकल जाते हैं वो वापस नहीं आते। सो आप चाहे बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई भी फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या अपने घर में अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपनी डेली लाइफ में कम्युनिकेट कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक बिफोर यू स्पीक, बिकॉज व्हेन वी से समथिंग वी डोंट थिंक अबाउट, it can lead to bad consequences that we may regret later. For example, you are angry with someone and then you just say bad things without thinking.
If he or she will get hurt with those words you speak, and you cannot get those words back. So, for effective communications and for avoiding embarrassment and conflicts, it is very important to think before you speak. And also, your tone of voice matters a lot because जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको जो टोन ऑफ वॉइस होता है, बात करने का जो तरीका होता है, वो भी बहुत मैटर करता है। यहाँ पर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल जो है वो कोट करती हूँ। आपने अपने किसी फ्रेंड को इनवाइट किया है घर पर और जब जाने का टाइम आया है तो आप उसको बोल रहे हो कि रुको मत जाओ। इट मीन्स कि आप उसको रोक रहे हो जाने से। लेकिन इन्हीं वर्ड्स को अगर आप इस तरह से बोलते हो रुको मत जाओ, अब वर्ड्स तो वही हैं लेकिन इनका मीनिंग चेंज हो गया है कि आप उसको रोक नहीं रहे बल्कि जाने के लिए कह रहे हो। सो कहने का मकसद ये है कि कम्युनिकेट करते हुए आपने अपनी टोन ऑफ वॉइस पर, अपने लहजे पर भी ध्यान देना है कि आपके बात करने का अंदाज कैसा है। इफ़ यू मेक हैबिट ऑफ थिंकिंग बिफोर स्पीकिंग, you will never get embarrassed. Ninth tip is treat everyone equally. Do not talk down to anyone. Treating everyone with respect. Treat others as your equal. It means जब भी आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उसे प्रॉपरली रिस्पेक्ट देनी है, उनके इमोशंस को हर्ट नहीं करना। Treat them equally, respect them just as you want respect from everyone. Tenth and the final tip I am going to share with you is maintain a positive attitude and smile. Even when you are speaking on the phone, smile because your positive attitude will shine through and other person will know it. When you smile often and exude a positive attitude, people will respond positively to you. It means कि जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, चाहे आप फेस टू फेस कर रहे हैं या फ़ोन पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ज़रूरी है कि आपके चेहरे पर जो है वो अच्छी सी स्माइल होनी चाहिए because it means that you are showing positive attitude and as a result people will respond positively to you. Finally, these were the 10 most important tips I want to share with you. Hope it can help you to boost up your communication skills. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.